Assalamu alaikum to everyone. Is my voice clear to all of you? Yes, sir. Walaikum assalam. Okay. So today I'll be able to take only one class, and it is about analysis. We will do some analysis of literary text. But before we start analysis, I would like to ask you people, what is analysis, by the way? What is called analysis, and what do we need to analyze text? Yes, whatever you know or whatever you have in your mind, you can say. Find out some actual meaning from text. Whenever we an analysis is the system in which we break the complex system into parts, like in thesis there are some parts, but we divide like literature review, results, discussions. Analysis is one of the parts that is called data analysis. Okay, so what is analysis here? Here we are talking about literary discourse analysis. There is another analysis that is called media discourse analysis, text analysis. So here we'll discuss that. We'll discuss or we'll do analysis of literary text. I've taught you so many literary devices which you will have to use here. We also do analysis from grammatical point of view, from semantic point of view. That is also called analysis. Remember, before 1st of December, I will try to complete your course, and then from 1st of December, I will start presentation, and you all have to give, of course, one presentation each for your both subjects. Means you'll have to give 2 presentations, and presentations will be taken. I will try to conduct presentation maybe, every day or maybe every second day, so that we can complete it, or it can be done before as soon as possible. Is that clear to all of you? Yes, sir. और प्रेजेंटेशन का मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी तरीका कार है वो सब आप लोगों को बता चुका हूँ, और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो सवाल से पूछ सकता है. प्रेजेंटेशन ऑनलाइन होगी, and it should be the presentation of 8 to 10 minutes. You will prepare a presentation PPT, and then you will send it to me, and I will, on 1st of December, you will send it to me, and I will share that presentation with you, and you'll have to explain your slides. And I will ask you some question, and then I will say thank you very much. This is how your presentation will be done. Okay, is that clear? Now you can see here. Yes, sir. In front of you, I have opened MS Word. Can you see MS Word? Is it open to you? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now you can see here, there are lines. Can anyone read these lines? Read not to contradict and confute, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider. This is one sentence.
How will you analyze this sentence? Yes. What is your understanding to this sentence? Do you know whose lines are these? Do you know about Francis Bacon? Yes, sir. He is the father of the essayist, Father of English prose or essays, right? prose writers. He was a great prose writer, and he was the prose writer of Renaissance. And English prose got, you can say, improve, or English prose got the height when Bacon wrote essays. So he was the father of English essays as well. And you can read his essays. His essays are full of wisdom and brevity. Now, the sentence which we have here in front of you, what do you understand by this sentence? Yes. क्या आपको इस सेंटेंस से समझ आता है? क्या आपको समझ आपसे अगर कहा जाए इसको एनालाइज करें, तो आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे? Let me put it over here. Yes. Now you can see. How do you realize this one? Read not to contradict and confute, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider. What is he talking about? किसके बारे में बात कर रहा है? कुछ तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा ना? मुश्किल अंग्रेजी तो नहीं है कि जिसमें हम कहें कि it's not understandable. Yes, try your best. सर एज व्हाट आई सपोज कि ये सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि कोई भी चीज आप रीड कर रहे हो, पहले से आपको अपना माइंड नहीं बनाना है, कि किसी चीज पर फौरी बिलीव नहीं करना है या कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना है. रीड इस तरीके से ये जो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है. Okay. Now actually you are facing problem regarding words. So remember, when you read, so you may face problem regarding words. उस एरिया को उस तरह से रीडिंग करने को वर्ड अटैक स्किल कहा जाता है, जिसमें हम वर्ड को अटैक कर रहे होते हैं, टेक्स्ट अटैक को अटैक कर रहे होते हैं. So remember, when you read, so you should use inference as well. Inference means you know that this essay is has been written by Sir Francis Bacon. तो एक चीज ध्यान में आएगी, he was a great essayist and he was the one who brought something very special to English prose. तो ये बात ध्यान में आ गई. फिर एक चीज और ध्यान में आपके आगे होगी कि this essay is from, these lines are from his essay of study, in the essay in which he has talked about the advantages of study, and he's talked about many other things regarding study. ये भी आपके पास एक इन्फ्लुएंस में शामिल हो जाएगा. तो ये जो वर्ड आपको कॉन्ट्राडिक्ट और कंफ्यूट, ये आपको हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो. और कोई इस हवाले से बताना चाहेगा? Yes, sir. या यूज योर इन्फ्लुएंस एज वेल. जो एविडेंस सामने नजर आ रहा है उसके तहत आप इसका कंक्लूजन निकालें. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज बीन यूज्ड हियर? स्ट्रक्चर, क्लॉज, लैंग्वेज. How do you analyze this one? This first part, read not to contradict and confute, nor to believe and take for granted. Sir, hyperbole, figure of speech. Hyperbole कहाँ पर है? Where? Sir, ये contradiction में use होती है. Hyperbole means exaggeration. There is no hyperbole. You can see here multiple clauses. एक चीज तो सामने आ गई. ठीक है, स्ट्रक्चर लेवल पर you will find 3 clauses in one sentence. Number 1, read not to contradict and confute. Number 2, not to believe and take for granted. Number 3, not to find talk and discourse, but to weigh and consider. So there are 4 clauses in one sentence. एक तो ये चीज आ गई सामने. Secondly, you will find here linking word, जिसको हम क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा links और लिंकिंग वर्ड और सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कंजंक्शन आपने यहाँ आपको मिल रहा है. नाइदर, नॉर. बाय यूजिंग नॉर दे हैव connected the sentences. So read not to contradict and confute, nor
and then nor, आखिर में but लगा के इन्होंने इसको क्या कर दिया, conclude कर दिया. So you can see 4 clauses are there in this particular essay, and when we read this sentence, it has also a flow. इसमें एक अच्छा सा flow भी चल रहा है. मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि when you read it, so you'll get bored, so you'll find a flow in these sentences. So it is about contradict का मतलब जो है कि किसी से आप इख्तिलाफ करें, यानी कि आपने पढ़ा सिर्फ इख्तिलाफ के लिए, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कन्फ्यूट भी तकरीबन इस तरह के मानों में. फिर कह रहे हैं ना ही आप इसलिए पढ़ें कि आप अंधा या यकीन, यानी अंधा क्या कहते हैं, बिलीव करें किसी पर भी ना, कि आपने पढ़ा तो आपने कहा नहीं बस यही ठीक है, या टेक फॉर ग्रांटेड. ना ही इसलिए स्टडी करें या पढ़ें to find talk and discourse, but to weigh and consider. So some people do one thing, that they read or they study and they try to contradict or confute, or some people read and they believe straight away. So he says that you must use your mind and then you should accept whether it is good or not, but read it properly and then you should decide this one. तो जब हमने इसको dissect किया या इसको analyze किया तो पता चला कि this sentence has 4 clauses. एक चीज तो ये सामने आ गई, दूसरी क्या आ गई, it has connector, nor, linking word, nor and but. और क्या चीज सामने आ गई, it is telling us about reading, why should we read, and और इसके अलावा Advice. it's just a kind of advice. Okay, language is not difficult. Remember, this is something that Bacon said almost 400 or 500 years ago, right? तो ये आपके पास फर्स्ट वाले से हो. अब आप सेकंड वाले पार्ट को पढ़िएगा. Some books are to be tested, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Yes. How do you see this one? और आगे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. Some books are He to asking be he asking about kinds of books and he's talking about uh, थोड़ा सा पढ़ kinds लें. of books. Just read for a while. ये याद रखिएगा, मैं जो आपको दे रहा हूँ उस वक्त, these are the very famous sentences of Bacon, right? I'm not giving you any difficult and obsolete or very obscure type of sentences. These are very famous sentences of Bacon, and in fact they have become a kind of quotation. तो थोड़ा इसको पढ़ें, सोचें क्या हो सकता है, then you can answer. You may take time. Yes. Sir, he Yes, sir. asking about Yes. Yes.
Yes. मे बी ये कहा जा रहा होगा कुछ बुक्स जो हैं वो हम उनको सिर्फ रीड करते हैं, मतलब उनका हम टेक्स्ट को या उसके मीनिंग को समझने की कोशिश नहीं करते, नहीं या कुछ के मीनिंग को जो उसमें बताया जा रहा था उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। Okay, right. सर Okay. जैसे इसमें सर इसमें ये भी बात है जैसे कि हम तमाम बुक्स जो होती हैं वो एक जैसी मतलब उनको हम अटेंशन नहीं दे रहे होते या उनका मीनिंग एक जैसा नहीं होता। हर बुक्स की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग उसके हिसाब से हम उसको अटेंशन देते हैं। Okay, very good. और कोई जो चीज आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं कि व्हाट डू यू थिंक दिस सेंटेंस और दिस पार्ट हैज? यस. सर ये बुक के टाइप्स ऑफ रीडर्स का बता रहा है, कैसे टाइप है ये रीडर्स अटेंशन से पढ़ते हैं कुछ बुक, कुछ जैसे सिर्फ स्कैन करके रीडिंग के थ्रू पढ़ते हैं, कुछ स्कैमिंग रीडिंग के प्रैक्टिस के थ्रू Okay, पढ़ते हैं। it's telling us about different types of it. What do you think from technical point of view, from semantic point of view, from grammar point of view, from literary device point of view? What do you think about all these point of view, from all this point of view? Yes. Some books are to be tested. Of course, here he is telling us about what books to study at what length. He says some books are to be tested. Here he is using what? ये tested से मुराद क्या है? टेस्ट किसे कहते हैं? चखना. किसे कहते हैं? चखना. तो what is केयरफुल अटेंशन नहीं देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या कौन सी लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल कर रहा है? Which literary device is he using here? Some books are to be tested, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. अब ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं आप ये बताएं? स्वॉलोड हड़प करने को कहते हैं, च्यूड चबा चबा के खाने को कहते हैं, और डाइजेस्ट करने को कहते हैं. तो क्या कह रहे हैं कि कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको आप सिर्फ टेस्ट करें, चखें उसे, कुछ ऐसे जिनको आप हड़प कर लें, और कुछ ऐसे जिनको चंद एक ऐसी हैं जिनको आपने च्यूड करके करना है और डाइजेस्ट करना है, नहीं उनको आपने चबा 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 कर खाना है और उसके बाद उसको हजम भी करना है. फिर आगे उसने एक्सप्लेन भी किया कि मींस सम बुक्स आर टू बी रेड इन ओनली पार्ट्स, अदर्स टू बी रेड बट नॉट curiously, and some few to be read completely and with careful attention, with diligence and attention. तो ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? या सिमिली, मेटाफर, क्या क्या कहेंगे इसे आप? यस सर, पन, सर इस मेटाफर मेटाफर. यस सर, क्योंकि वो एक हम चीज को इमेजिनेटिव व्यू में दूसरी चीज को बता रहे होते हैं सर. जैसे इसका दिल पत्थर का है, he has a heart of stone. So here he is using this literary device, and he's trying to tell us that there are some books which have to be only read in parts, यानी कि उनको मुख्तसरन पढ़नी है, उसकी समरी भी आप पढ़ लेंगे चल जाएगा काम. Others to be swallowed, और कुछ ऐसा है जिसको थोड़ा सा आपने लेंथ में पढ़ना होता है, ठीक है. लेकिन चंद एक ऐसी किताबें हैं which have to be read completely and with careful lots of attention. तो उसको यहाँ पे इसने क्या कहा? Chewed and digested. So now this style and this way is so interesting that people understand, or we can easily understand कि chew क्या होता है, digest taste क्या होता है, swallow क्या होता है, और chewed and digested क्या होता है, इनकी क्या अहमियत है. So this is how he's trying to make us understand that how we should read books, and which books we should read in which way. Is that clear? From language point of view, we can see this is of course in present tense, and whatever he's saying, it has very you can say it is appealing to us, and it is just like a kind of advice, or just like you can say a kind of proverb. It has become a kind of proverb as well. Then you can see here in one place he says, begin doing what you want to do now. We are not living in eternity. Let me
take it over there. What is it? Says, begin doing what you want to do now. We are not living in eternity. We have only this moment, sparkling like a star in our hand and melting like a snowflake. Yes. What do you think? Just take your time, take 1 minute, and then tell me, what do you understand? How do you analyze this sentence from, literary device point of view, from structure point of view, from even grammar point of view? Means, sir, we do not want to wait for things to happen and we should do whatever we want to do. Okay, good. Any other thing that you want to tell, or any other student want to tell? Very good. We should live the moment rather than waiting for the perfect moment to come in our life. Okay. Right. And सर मैं भी इसमें ये कह रहे हो कि हमने जो करना है वो हम अभी कर ले, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि हम वेट करेंगे ये चीज हमने उस टाइम पे करनी है या वो वक्त आएगा, जो करना है अभी करना है. ओके, राइट. लेकिन इसका ये बताया ना, ये तो आपने इसका बताया, यू हैव जस्ट टोल्ड द मीनिंग. What do you understand by how do you analyze this one? Tell me about the analysis style and all such thing. सर इसमें ऐसे हो सकता है ना, जैसे इंसान की हर टाइम सिचुएशन सेम नहीं होती है. जैसे अभी लाइफ में डिफिकल्टी है तो फ्यूचर में वो चेंजिंग आ सकती है. Yes, but remember you have to analyze it from different other point of view. You are telling me about, of course, it's in conclusion, or you're telling me about its hidden meaning as well. लिटरल मीनिंग और हिडन मीनिंग तो आप बता रहे हैं, साथ में ये भी बताएं कि इसमें जो राइटर का स्टाइल है वो क्या है, ग्रामेटिकली कैसा है, और ये चीजें भी आप थोड़ा इसको भी डिफाइन करें. बिगिन डूइंग व्हाट यू वांट. एक तो चीज ये है कि इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस. द राइटर इज डायरेक्टली एड्रेसिंग हिज ऑडियंस और रीडर, राइट? एंड देन ही इज इंक्लूडिंग एवरीवन, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ. We are not living in eternity. यानी कि वो डायरेक्टली एड्रेस आपको कर रहा है और उसके बाद वो अपने आप को भी इंक्लूड करके सबको इंक्लूड करके कह रहा है, we are not living in eternity. We have only this moment, sparkling like a star. Here he is using simile. क्या इस्तेमाल कर रहा है? Simile. He sparkling like a star in our hand. Sparkling like a star in our hand, and in our hand melting like a snowflake. Yeah, melting like a snowflake. So here he is comparing this time with snowflake. With माइक को अपने बंद कर दिया करें जब आपने, एक्सक्यूज मी, प्लीज म्यूट योर माइक. मिस जवेरिया बशीर, आपके यहाँ से आवाज आ रही है. बस तेरा मोबाइल ना हॉटस्पॉट है मलक. Is my voice clear to all of you? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? Yes sir. Yes, sir. मैं ये कह रहा था, किसी एक की आवाज आ रही है, मेरे ख्याल जवेरिया बशीर के यहाँ से आ रही है. तो काइंडली आप ना जो भी जब पार्टिसिपेट करने लगे तो उस वक्त अपने माइक को आप, मैं भी जब अपना
when I don't speak, so I just mute my mic. So kindly you should also mute your mic. और ये सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है, आप थोड़ा सोचो, ये रिकॉर्डिंग और इसको मैंने यूट्यूब पर आप लोगों के लिए लगाना भी है. So kindly when you speak, then you can you know, you can say or you can क्या कहेंगे वैसे, हम म्यूट, आप इसको रोक दीजिएगा, अदरवाइज यू हैव टू म्यूट योर माइक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो मैं क्या आप लोगों से कह रहा था कि this sentence, when you analyze, you will find here simile, sparkling like a star. So here is the writer Bacon is comparing this, you know, time with star, and he's comparing this time with snowflake as well. Snowflake किसे कहते हैं? बर्फ के ढेले को कहते हैं जो मेल्ट कर रहा है. So he's saying that it is melting like a snowfall. So simile का इस्तेमाल इसने करके बताया और बताना चाहा कि भाई किस तरह से हम लोग, हमारा ये टाइम जो है ये हमसे, हमारे हाथों से जा रहा है और कितना अहमियत है. And we have only this moment. He's saying that the moment we are in, this is the only moment that we have. And we are not living in eternity. Eternity means eternity where no one can die, where people will live forever. They also have this belief. So here we can also see religious touch, religious element we can also see here. So importance of time, you can finally conclude that he's telling us about the importance of time we have right now. आपने एक मुहावरा सुना होगा कि आप I just forgot that proverb. It's a very interesting one. A bird in hand is worth than two in the bush. इसका कोई एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि जो आपके पास अभी है वो वही आपके पास जो है ना असल चीज है. The thing which you don't have right now, you are just imagining, that is not yours. Then another discourse: to spend too much time in studies is sloth, to use them too much for ornament is affectation, and to make judgment completely only by their rules is the humor of a scholar. What do you understand here? Yes, what do you understand here? Yes, there is a complete silence. सर यहाँ पे आई गेस ये बताया जा रहा है कि हम अपने स्टडीज के थ्रू कैसे जजमेंट कर सकते हैं, एक कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लाइक हाउ कैन बी लाइक अ क्रिटिक. ओके, राइट, वेरी गुड. और कोई आप में इसको बताना चाहेगा? ओके, गुड. To spend too much time in studies is sloth. To use them too much for ornament is affectation. And to make judgment come wholly by their rules is the humor of a scholar. So what literary device has been used here? सर पन तो नहीं कहेंगे इसे सर, उसमें ह्यूमर थी ना, उसमें ह्यूमर यूज करते हैं. हाँ, लेकिन यहाँ पे ह्यूमर नजर आ रहा है आपको? Here you will find I think क्या कहेंगे इसे हम? मेटाफर तो नहीं है कहेंगे? सर मेटाफर है. And to infinitive जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, to infinitive clause.
from grammatical point of view, to infinitive clause, to spend too much time is in studies is sloth. To use them too much for ornament is affectation. And uske baad you will find here three clauses, or yes, three clauses in one sentence. To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. So you can say he is used here metaphor. It has three clauses, and you'll find here what? Two infinitive clauses. And here he is telling us again that what happens when we spend too much time in it. So everything has actually a specific time. Neither we should spend too much and nor we should spend too little. तो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ज्यादा इनको ज्यादा अगर आप इसको हर जगह इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या आपको नुकसान भी हो सकता है. And to make judgment completely by their rules is the humor of a scholar. So there are places where we do not follow, means everywhere we do not follow, bookish things. तो ये भी इसका इनका एक मकसद है बताने का. Then we have this one. The eye of the human understanding is not a naked organ of perception, but an eye imbued with moisture by will and passion. Man always believes what he determines to believe. What do you understand by this? Yes, Arya. The eye of the human understanding is not a naked organ of perception, but an eye imbued, means filled with moisture by will and passion. Man always believes what he determines to believe. Hurry up. What do you understand? Perception मतलब जिसको हम perceive करते हैं. Yes, come on. सर इसमें तो मुझे एक ही लाइन समझ में आ रही है कि मैन हमेशा उसी चीज पे बिलीव करता है जिस पे वो बिलीव करना चाहता है. बाकी में क्या प्रॉब्लम है? It's little bit difficult. What difficulty? Imbued means filled with moisture, जैसे नमी को कहते हैं. By will and passion. Will and passion both are used in capital letters. So it means they are given importance. Will कहते हैं इरादे को, passion या passion means जज्बा. ठीक है. तो क्या कहता है? The eye of the human understanding is not a naked organ. ये कोई naked organ नहीं, naked कहते हैं जो के सामने नजर आता है. मतलब सर किसी की अंडरस्टैंडिंग को हम सामने देख के समझ नहीं सकते, किसी भी ह्यूमन को समझ नहीं सकते हम. The eye of the human understanding is not a naked organ of perception. यानी कि perception का कोई naked organ नहीं. Naked means here something that is visible totally. But an eye filled with moisture by will and passion. लेकिन वो eye जो कि moisture नमी से भरपूर हो with by will and passion, जिस will और passion की नमी से. क्योंकि इंसान मैन ऑलवेज बिलीव बट ही डिटरमिन्स टू बिलीव. इंसान हमेशा उस चीज पर यकीन रखता है जिसको वो यकीन रखना, जिस पर यकीन रखना चाहता है. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड दैट ही इज टॉकिंग अबाउट आई. ही इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू आई हियर, द आई ऑफ द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. यानी कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली ही इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. So understanding is something that is not easy to develop, and sometimes we develop understanding where we have a will. और क्या समझ में आया? सर हम फ्रांसिस बेकन के एसेस को पढ़ रहे हैं. No, we are talking about literary discourse. We are just doing analysis. ये तो इसके कोई पता नहीं कितने सारे ऐसे हैं, तो मैंने कुछ लाइंस उठाई हैं इससे, कुछ चार्ल्स डिकन्स से उठाई है, कुछ मैंने जॉन मिल्टन से उठाई हैं. ठीक है.
तो अब जाहिर है ये अगली क्लासेस में 2-4 ऐसी क्लासेस होंगी जिनमें ये आपके सामने आएगा, और you have to find you know you have to do analysis from different point of view. मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक जुमला है, men fear death. अभी चूंकि मैंने थोड़ी आसान चीजें आप लोगों के लिए उठाई हैं, अगर एकदम से मैं मुश्किल ले आता तो you definitely would face great problems. Now this is a sentence. What do you say about this? Yes, Hariyar. What do you say about this? Time is very short. These are easy sentences, remember? Sir, जैसे like man fears from death and children go fears by going in dark side, so it's natural to have fear in children's, and it's increased by tales, and there is nothing true in it. So maybe the man who fears from death, it's also like a tale which is not true, it's natural. So what do you think, what is the message of this sentence? That fear is natural, it's a human phenomenon, natural. Okay, so here he is telling about the fear. He says that fear not. Here he is telling us death is truth. He is telling that death is truth, जिसको हम कहते हैं मौत बरहक के. He is telling that why do we fear death when it is truth? Are you getting me? यहाँ fear की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है death की वगैरह. जब death अनअवॉइडेबल है, सबको पता है. जो इंसान है ना वो मौत को डर से देखता है, बच्चा जो है ना और वो भी मतलब देखता है ना तो डार्क में चला जाएगा, मतलब कि वो भी अब यहाँ पे कितना प्यारा मतलब अंदाज है, उसका स्टाइल है कि वो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है. ही इज यूजिंग सिमिली हियर बाय यूजिंग एज. ही इज कंपेयरिंग द फियर ऑफ मैन विद द फियर ऑफ अ चाइल्ड. चिल्ड्रन, नॉर्मली चिल्ड्रन फियर टू गो इन द डार्क. ऐसे ही ना भाई, बच्चे अंधेरे से डरते हैं, इसी तरह इंसान मौत से डरता है. हालांकि मौत जो है बरहक, सबको पता आनी है. कोई भी दुनिया का किसी भी मजहब का बंदा ये नहीं कह सकता कि मौत नहीं आनी, उसको सबको पता आनी है. लेकिन फिर भी इंसान उससे डरता है, जैसे बच्चे अंधेरे से डरते हैं. हालांकि उसी कमरे में अगर उनको रोशनी में भेजा जाए तो दे विल नॉट हैव एनी फियर. ऐसा होता है क्यों है? आगे बता रहा है कि दैट नेचुरल फियर इन चिल्ड्रन इज इंक्रीज विद टेल्स, सो इन दी इज द अदर, because they are told so many such tales, fictitious tales and such tales, so that fear is something that increases in their heart, or fear is something that becomes a part of their mind. डर उनके अंदर बैठ जाता है. तो डर बैठ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि they fear in the dark. Similarly, men fear death. So in this particular sentence, he is telling us about that death is truth, and we should not fear death. So you can see how beautiful this style is, and he is using simile here. And this sentence again has 2 or 3 parts, and of course यहाँ पे उसने मैन को कैपिटल रख के एम्फसाइज किया कि इंसान की बात की जा रही है. ठीक है. So this is how inshallah we will do analysis in the next classes. Remember, media discourse analysis में हम analysis करेंगे from the discourses which we have in media, just like age and other things. So मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया, तो आप लोग उसको साथ कीजिएगा इंशाल्लाह. ठीक है. सर कौन से टास्क दिए? I give you a task to find out 10 advertisement. सर वो तो असाइनमेंट्स में है हमारे. असाइनमेंट तो आपको कोई नहीं दिया मैंने, ये टास्क दिया आपको. 10 सर आज दिए ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, बताया था. So 10 advertisement you have to find out.